Namaskar, Swagatam. We would like to welcome you all on our 591st milestone of AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series, now which is the pioneer in knowledge sharing and inspiring to next gen. It is live on YouTube, so anybody can share. Please join our Kutumb app and subscribe our YouTube channel to have the view of 674 video. We have our approximately 4,000 subscribers, out of which Indian persons from AYUSH Prakriti is there. So thank you very much. Now I would like to request Professor Vishnu Prasad Sharma sir for his valuable blessings. Namaskar. Good evening to everybody. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on best support to prevent self-injury. Most important subject today we have. So I want to welcome eminent speaker, Dr. Rinjin G. Krishna, Associate Professor, Department of PG and PhD Studies in Kaya Chikitsa, Parul Institute of Ayurveda, Parul University, Bododara. Namaskar and welcome you, sir. Next, welcome Mrs. Purnima Sonkar, Clinical Psychologist, District Hospital, Indore. Namaskar, madam, and welcome to this evening webinar. Next, I want to welcome Boidya Parul Joshi, Principal, Sri Bala Hanuman Ayurved Mahavidyalaya, Gandhinagar. Namaskar, madam, and welcome to this evening webinar on best support to prevent self-injury. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on best support to prevent self-injury. Namaskar, over to Pavanji. Thank you very much, sir. Thank you very much for your blessings. I would like to request Professor V.K. Agnihotri, sir, for his preamble. Thank you, Professor Pawan Sharma, and our namaskar and respect to all the dignitaries who have joined our today's webinar, along with our guest speakers, of whom's deep knowledge we are going to be benefited in today's evening total presentation and discussion. The topic which has been selected by our organizers team, the best support to prevent self-injury, it itself carries a lot of meaning. Rather, it can be read in between the lines. Injury, self-injury, and then to prevent it, and again to prevent it with the best support. Now, if subject-wise or letter-wise we talk about, injuries are always happening, and they are happening physically and mentally both, by our own words, by others' words. And again, to prevent it, to keep mum, to control over your emotional reactions, as it been told under the heading and topic of the Vega Vidharana, Manovegancha Dharya. By holding the Manovegan, one will be in position to self-control the self-injuries. And of course, the injuries may be sustained by the efforts of other person, those who are opposing you or those who are not liking. At the same time, the best support. So the best support, as far as the physical injury is concerned, if we feel that we are unable to stand properly, we can go with the stick support. We can hold the railings of the ladders we are going up and coming down. We can
make ourselves careful on walking when it is a, say, wet floor, or just after this mopping. We can use the anti-skid slippers, footwears. But beyond of that, beyond of the injuries which are taking on every tick of the clock, every tick of the clock, not a single second is free which can prevent you. So you have to make all efforts to prevent yourself with the grace of God, with the presence of mind, with the greetings and ashirwad of the senior persons. You have to manage by your own. Great topic. I don't know. I am scared enough that Madam Parul Joshi will definitely touch those points which I have just took in the consideration, that how the manovegan is to be controlled or to be kept under control, and it will lead you to self injured status away. And of course, it will be a great support. With these starting words, though there is much more to say, but it is better to listen. So to listen from our guest speakers, I do hope that they will be enlightening us and will going to enhance our knowledge. Our humble request is this, that since we are all of time value persons, we are supposed to have a good discussion, concised, to the point, not to be repeated, and voluntarily we raise their hand so that my work after the presentation will be easy. We are grateful if we finish our this webinar by 10 daily. Thank you so much. Over to Pawan. Namaskar. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Today's day is very unique, sir. This is for self-injury. Self-injury, when anyone can beat himself. Suppose when he is in highest mode of depression, anxiety, and he is not feeling, means he is not able to transform this energy to different person in front him or her. So he or she starts generally beating himself or herself. So this is psychological problem, and I am glad and thankful to Dr. Suhas Kumar Sethi ji, Director of KLE Belgaum, that he has introduced very right person for the day, Dr. Ranjan Gopal Krishna. He is from Kerala, pursuing his PhD also. He is assistant professor also, and done diploma in clinical hypnosis. He would be better to communicate this in his vision. Please, Dr. Ranjan Gopal Krishna ji. Welcome. You are mute. Please unmute. Yes. Am I audible? Yes, clear. Welcome. Thank you, sir. Thank you. Thank you for the wonderful welcome to all of the dignitaries. Share the screen. There is some edit sound. Please make it clear. Just make it. Is my screen visible? Hello? Yes, yes. Yes, sir. You can go for slideshow. Yeah, Maximize the slide. it's maximized, sir. Okay. So, as we all know, today is the day we are observing Self-Injury Awareness Day. It is very apt in these days when it is very difficult with coming up new generation kids who are finding it very difficult to cope up with a lot of stresses that is happening in their day-to-day life, whether it be related to their family, whether it be related to their education, and whether it be related to job. They're all finding it very difficult to handle these situations, and that is somewhere
when they feel overwhelmed with this kind of stress, and then because of lack of understanding or lack of awareness and a lack of a support system, they tend to get into these kind of unhealthy behavior, where they get into these kind of self-injurious or self-harming attitude. So first, we'll just understand the background. Adolescents with immature mind and unstable control are high-risk groups of non-suicidal self-injury behavior. The aggregate prevalence of non-suicidal behavior is seen to 22%, where repetitive behaviors is seen as more common than the episodic behavior. Frequency of mild injury and that to the moderate injury is almost similar. Excuse me, sir. Your slide is not changing. I'm on the second slide, I guess. Sir, It's not it's changed. showing first slide only. Yes, sir. Okay. Now is the slide moving? Not yet, sir. So, Yes, sir. Yes, sir. Now it's moving. okay. Yes, sir. It's on Yeah. fourth slide, sir. Okay. The background slide. Is it the Uh, background slide? It is self-injury slide, sir. Okay. I think there is some network error. I hope now it will be background. Shall I just stop my video so that the No, network? no, please stop share and then again share. Okay. Stop share, then again share. Yes. Now please share. Yes. Now go on first slide. Yes, yes. Yes. Now it is changing. Now it is training. I think now You it is can- background slide. This is only in PowerPoint mode. It is not in presentation mode. It is in PowerPoint mode. We can, in which we are editing the PowerPoint. I have Yes, changed it is into- background. Background slide. Yes, Yes. Yes. yes, yes. So repetitive non-suicidal behavior is more common than the episodic non-suicidal behavior. Frequency of mild injury is almost similar to that of moderate injury. More common behavior seen is banging head or hitting head, pinching or pulling hair. Least common behavior seen is swallowing drugs or toxic substances or chemicals, which lead to these kind of self-injurious behaviors, which lead to sometimes fatal, disastrous ending also. Now, what is self-injury? Self-injury, also called self-harm or self-mutilation or simply cutting, is defined as any intentional injury to one's own body. It is usually not meant as a suicidal attempt. Slide. Please change the slide. I've changed, sir, already. Can you go in presentation mode? I am in presentation mode only, sir. Here, yeah, on my screen, it is presentation mode actually. Uh, Just a moment. yes. Now it is self-injury. Okay, now it is presentation mode. No. It is PowerPoint mode. Basic structure. Okay, now Where we can edit. Yes, please Yes. continue. You can continue. So self-injury, also called self-harm or self-mutilation, is any intentional injury to one's own body.
It is usually not meant as a suicidal attempt. This type of self-injury is a harmful way to cope with emotional pain, sadness, anger, and stress. These are some of the self-injurious behaviors that we can see. Now, what is self-injury? That is self-cutting or burning or hitting, excessive tattooing, body piercing, or carving words or symbols into their skin, pricking skin or reopening wound or hair pulling, indulging in head banging or bone breaking activities. The prevalence, it is more commonly seen in adolescent females, people who have a history of physical, emotional, or sexual abuse, people who have coexisting problems of substance abuse, obsessive compulsive disorder, or eating disorders, individuals who were often raised in families that discouraged expression of anger, individuals who lack skills to express their emotions and lack a good social support network. Causes which can be seen are poor coping skills, difficulty managing emotions like anger, guilt, rejection, loneliness, low self-esteem or self-worth, attention-seeking behavior is sometimes rare. Leading factors, temporarily relieving intense feelings, pressure or anxiety. These are some of the factors which are leading to the causes. So temporarily relieving intense feelings of guilt, intense feelings of pain, intense feelings, pressure or anxiety, being a means to control and manage pain, unlike the pain experienced through physical or sexual abuse or trauma, asking for help in an indirect way or drawing attention to the need for help, and attempting to affect others by manipulating them, trying to make them care, trying to make them feel guilty or make them go away. Now, how to interpret these kind of behaviors? So whenever a persons are indulging in these kind of behaviors, how we have to understand that? Your So, slide number 5 is visible only. okay. Yes. Yes, kindly continue. Yes, sir. So how to interpret these kind of behaviors? So usually managing you to manage or reduce severe stress or distress or anxiety, and to produce a sense of relief, provide a distraction from painful emotions through physical pain, feel a sense of control over the body, feelings or life situations, express internal feelings or communicate feelings of stress or depression in an external way to the outside world, sometimes even to punish oneself. Now, how do we understand this kind of behaviors in Ayurveda? So basically in Ayurveda, when we come to the concept of Pitta Unmada, we have when we come to concept of Pitta Unmada, we have this understanding of self hurting or hurting others. These kind of behaviors are seen, especially Santarjana, Krodha, these kind of behaviors. There is aggressive behavior or excessive anger, excessive agitation and outburst, hurting self with sticks, rod, fist, or any other blunt or sharp instrument. So all these can be understood under the self-injury or self-harming behavior that we get references from Ayurveda. Now, how to approach so in Ayurveda, when we go for the approach, so the most of the understanding is done through history taking. So the whole screening and assessment were helpful in history taking, understanding how the certain issues have started, or that's a particular behavior of self injury or self harming has started. Through a thorough history taking, it gives a very good idea as to what are the major reasons leading to this kind of behavior.
And along with that, assessment of Prakriti, Dosha, Agni, and Sattva also helps in the intervention. So necessary ingredients for a changing behavior. Whenever we need to change any behavior, these are the most important necessary ingredients. That is, one thing is awareness about self and awareness about the environment where one person is living. Emotional intelligence meaning understanding our own emotions and understanding how to manage those emotions in a particular time and place. And the motivation here, both motivation, self motivation, and the motivation that a person gets from others. So these are the basic ingredients which are very necessary for helping oneself to change any kind of behavior, especially any kind of ill behavior which is leading to any kind of ill health. So since self injury or self harming has to be considered as ill behavior issue, so awareness, making the person aware about self and making him aware about environment, giving him knowledge about emotional intelligence, and also motivating that person, it will help changing the behavior. When coming to chikitsa in Ayurveda, we follow chikitsa in Ayurveda, we have to go through ahara, vihara, achara, and aushadha. That means the diet, the activities and lifestyle, psychological measures to be taken, and the medicines and treatment. So altogether, all these four, when taken care of, will help the person to come out of that ill health or ill behavior and to get into the behavior that will help him cope up with these kind of self-injurious behavior. Factors responsible to stress reaction. As we all know, Prakriti, physical constitution and the mental constitution play a very important role in making a person behave in a particular way to the particular situations. So understanding the Prakriti of the person will help in helping him to de-stress or to come out of that kind of a stress. Understanding the sattva of the person will help us to understand what level of motivation that particular person requires. At what level is he self-motivated, or he requires any kind of motivation from outside so that he can come out of these kind of behaviors. Also understanding Agni and Ojas, that is to help him understand his body well, and to help him have a healthy lifestyle and a healthy food habit so that he can have a good health. And when physical health is improved, it in turn improves the mental health, and when mental health is improved, it in turn helps the physical health. And personalized approach that we provide in Ayurveda, as every individual, we have to understand him differently, we have to understand him personally, so that we can understand the problems that he is facing, and thereby trying to consider those reasons and try to help that person come out of that. Ahara, some of the stress buster food that can be helped, that can be given to these people are like, especially water. Intake of water is very important. Milk is a very good stress buster. Ghee is a very good Slides are stress not buster. moving. Slide is stable on 18th. Okay, sir. Yes. Ahara, some of these aharas which are very good stress busters are water, milk, ghee, gooseberry, raisins or almonds, ashgard. They are very good stress busters which will help removing the stress. Vihara, under vihara or psychotropic remedy, is making him making him or her go for a regular reading, getting them into discussion regarding various issues, discussion regarding the issues they are facing, maybe the reasons what they think are leading up to these kind of ill behavior, and helping them understand how to manage these. And integrative and collaborative medicine, along with Ayurveda, you can also go with yoga, physiotherapy,
And all these integrative and collaborative approaches, behavioral therapies, psychotherapies, it can be used, seminars and webinars. And again, these all are for making him or her understand the various situations, understand the various factors which are leading to these kind of ill health. Achara, that is Sattva Vijaya line of treatment, or psychophysical and spiritual exercises designed to achieve a regulatory mechanism or balance or equilibrium over human psyche in dealing with environment stressors, which are the indriyarthas, which can be considered as indriyarthas, or the environmental stressors, and also the emotional stressors or manoartha. So both manas and indriya, when they both are in equilibrium, when they both are working harmoniously, only then a person's mind will be happy. So we have to get him involved in these kind of psychophysical spiritual exercises, which will help him regularize or balance the equilibrium between the indriyathas and the manoarthas. Under Aushadhi, specialized therapies like Abhyanga, Pichu, Dhara, or Seka, Basti, these can help in a promotive way, in an integrative way, to help along with the other Sattva Vijaya treatments or along with the other psychotherapies, the Aushadhi or the therapies like Abhyanga, therapies like Pichu, Dhara, Basti, etc. They will help in also detoxifying and also to calm down the agitated mind. Some of the single drugs which are considered as stress adaptogenic. So regular use of tulsi, ashwagandha, brahmi, guduchi, mandukaparni, these on a regular basis, they help to reduce the stress. They are very good and they have very good antioxidant properties. So they reduce the oxidative stress, and also they help in bringing a calmness to the mind, bringing a good sleep. So when we try to understand these kind of behaviors, what are the family pattern and negative life events during childhood? So more in, as we see, most of the times it's the adolescent age group which is getting affected. So we have to understand, and in most cases in adolescence, it is the family which is the first line of support. So we have to understand family pattern and negative life events which are hurting these kids during childhood. So aspects of family dysfunction and instability and negative life events often found in self-harming children and adolescents, which are like parental psychopathology with the presence of affective or other psychiatric disorders in parents, alcohol or substance abuse or antisocial behavior inside in the family, which is leading them to get into these kind of self-injurious acts, a family history of suicide or suicidal attempts, a violent and abusive family, or including physical and sexual abuse of the child, poor care provided by parents or guardians, poor attention, poor care, poor communication within the family, frequent quarrels between parents or guardians, with a lot of tension and aggression inside the family, where the kids often don't feel like opening up their own problems, divorce or separation or death of parents or guardians, where again the children are um, they find it very difficult to cope up with this kind of stress because they are not able to open up their own um, psychological trauma that they are going through. Frequent moves to a different residential area, as kids they get adjusted to a particular area, they have friends over that area, and then when there is frequent moves or frequent transfers of jobs, especially for the parents, it makes it very difficult for the kids to get adjusted to a new area. Very high or very low expectations on the part of the parents or guardians. When kids are put up with a lot of expectations, or when they are not at all given any kind of expectations from them,
that also leads to kids get into these kind of self-harming behavior. So how to identify students in distress and at possible risk of self-harm? So how we can understand a particular person is going through this kind of behavior? Or so identification of distress: any sudden or dramatic change affecting a child's or adolescent's performance, attendance, or behavior should be taken seriously, such as lack of interest in usual activities, an overall decline in grades, decrease in effort, misconduct in the classroom, unexplained or repeated absence, excessive tobacco smoking or drinking, or drug misuse, incidents leading to police involvement or student violence. These kind of behaviors, they are the red flags, they are the risk factors which will let you understand a particular person can be of risk for self-harm. So what can be the protective factors? Protective factors, again, the family pattern. If there is a good relationship with family members, support from the family, if there is a good communication inside the family, between the family members, that helps very much to bring up the child in a very healthy environment with a very healthy mindset, so that they don't go into these kind of ill behaviors. Cognitive style and personality, good social skills, where they are where they are educated about having good social skills, good manners in the society, confidence in oneself and one's own situation and achievements, seeking help when difficulties arise, especially in schoolwork, especially when you have a good family support, good family setup. Whenever there is something good is done by the student, done by the kid, the parents rewarding that kid, or appreciating that kid will slowly improve the confidence in oneself. So these kind of achievements will help improve the confidence. And when there is proper communication inside the family, the kids also won't find it difficult to go and seek help or seek advice on important choices to be made. And openness to other people's experiences and solutions, openness to new knowledge, all these can be incorporated in these kind of, when we have a proper family setup. So most important is give your time, your words, your presence to these kids, so that we can get them into a proper healthy behavior. Connect, especially listen more, listen carefully to what the kids are saying. Maybe it might, those words might be indicative of some of the stress that they are going through. So trying to listen to them, connecting with them, making them feel that they are connected, will help the kids to open up with their issues, which might help to understand and help them in a very early period itself. Take notice, remember the small simple things that give the person joy. So understand what makes the kid happy, understand what makes the kid um, joyful. So trying to do such kind of, trying to incorporate such kind of things in the family environment, in the social structure, will help to bring up kids with a healthy mindset. Keep learning, embrace new experiences, see opportunities, surprise yourself. This is for oneself to understand how to be in a new environment. Whenever we get into a new environment, try to see opportunities in those environment, try to surprise yourself, and be active, do what you can, enjoy what you do, move your mood. So all these things. Along with this, when in Ayurveda, the most important treatment told for in any kind of mental issue is dhi dhairya atma divigyanam, where dhi dhairya and atma divigyanam, where understanding of dhi, or understanding of one's own intellect, dhairya, that is the one's own courage, understanding of one's own courage, so, or improving the self confidence, improving self esteem, and atma divigyanam, understanding atma divigyanam. Atma divigyanam here means
creating self-awareness or self-enlightenment. So how do we create? Slide. So I this is not from the slide. This is Okay. directly, yes. So understanding Atma Vijnanam or self-awareness or self-enlightenment. How do we understand? How do we understand ourselves, or how do we make ourselves aware? Is getting into SWOT analysis for ourselves. So understanding our strengths, understanding our weaknesses, understanding our opportunities, and understanding our threats. So strengths. By understanding our strengths, what we can do, we can try to improve our strengths. We can try to get our strengths even more stronger by continuous improvement, or by continuous um, repetition and rehearsal of whatever we have learned or whatever we have experienced, or all these things. We try to improve our strengths. About weakness, once you understand what is your weakness, we cannot run away from our weakness all the time. So we have to understand our weakness. Wherever there we find a weakness, we have to try to understand what exactly is the weakness, try to analyze the weakness, and try to improvise and learn new behaviors, new adaptive behaviors, which will help to improve these weakness into strengths. So we have to slowly we have to try to convert our weaknesses into strengths. Opportunities, every opportunity, whatever we are getting, try to grab it. Try to we don't know whether we will be able to do it or not until and unless we don't do it. So whenever we get an opportunity, sorry, whenever we get an opportunity, just take that and start. Most of the times what happens is we try to think too much about what is going to happen after we take that opportunity, or we try to think about the result. That is where we get into all kind of anxiety, all kind of fear, whether I will not be able to do it, I will not be able to and I will not be able to complete it, or I will not be good enough to do that. That all happens because we are jumping into conclusion. What we have to do is take the opportunity, be in the present, try to understand what exactly the opportunity is, try to get prepared for that opportunity, and try to present yourself in the best possible way. Just forget about what is going to happen. First, be in the present, be in the here, and try to improvise yourself, try to work on yourself, try to prepare yourself in such a way that you take every opportunity and make it the best. And the threats, the last point is understanding the threat. So threat or challenge, whatever way you can take it, is not something to be afraid of, not something to be run away. Threat, whatever the threat is, you think it is a threat because you are considering it from the point of your weakness. Try to understand, analyze what the threat is, try to understand what exactly has to be done in that condition. Analyze, you have already analyzed what your strengths are. Try to understand how you can use your strengths to manage these threats. That is the way you have to understand. So in this way, Dhairya Atma Vijnanam is actually the one and the best approach that we can give for any kind of mental health issues, especially in understanding self, so that we can create a very healthy physical and mental and spiritual and socially healthy self for the society. So to be healthy in and stress free, Ayurveda says Nityam Ita Ahara Vihara Sevi, that is regularly go for healthy diet and lifestyle. Please change the slide. Yes. So to be healthy in and stress free, Ayurveda says Nityam Hita Ahara Vihara Sevi, Samikshakari Visheshu Asaktaha, Data Sama Satyapara Shamavan Aptopasevi. So Ayurveda says regular intake of healthy diet and getting into healthy lifestyle, being understanding, being aware of the environment, being aware of self, uh, understanding your needs, understanding the
needs according to the situation, according to the time, being kind, being generous, and being truthful, and forgive for and having forgiveness, and also following the words of your elders, respecting your gurus, all together will help you lead a very healthy and stress-free life. So this is model for happy life, that is fly high. So what do you mean by fly high? F for first, L for love, Y for yourself. So first, love yourself. Most important thing is love yourself, understand yourself, accept yourself as you are, be happy with what you are, be happy with what you have. So that is the most important thing that we need to understand, and that we need to be really happy and healthy in this environment. And high, high, H for health, that is physical, mental, social, and spiritual health. So try to have a very healthy life, that is physically, mentally, socially, and spiritually. I or ego, or let go of that ego. G, gratitude, be grateful to whatever blessings you are getting every day. Be grateful for every day that you are getting to live life. And H for hope, hope always for the best. So once you follow fly high, once you follow this fly high method, that is first love yourself, and also have a proper health, let go of your ego, have gratitude in life, and also have hope, that will help you lead a very happy, healthy life. So keep smiling, and hope, creating hope through actions. Hope is finding happiness, opportunity, and positivity in everything and everywhere, every time. Thank you. Excellent, excellent, Dr. Gopal Krishnan. Excellent. Excellent, Ranjan. Very nice. Very nice. Agnihotri, sir. Thank you, sir. Namaskar. Thank you, sir. Professor Pawan Sharma, now start living and thinking like fly high. Fly high carries everything. We have to be prepare ourselves to think and to work in the terms of fly high, along with our especially uttered by Ayurvedic system, Dhi, Dhair and Atma Viram. These two things is, if Atma Jnanam is there in our minds, if we inculcate this thought, we will not only save ourselves from the self injuries, may also be instrumental to prevent the self injuries taking place in others' body and mind. Of course, the social life is also so important for protecting ourselves as far as the self injuries are concerned. Very nicely, you talked about the unattendedness of the kids in present scenario, not sparing minutes by the parents what their kid wants to convey, their grievances, their feelings, their good things, even the good thing. We have got not time to even appreciate their good activities, their achievement they are doing in the schools, classes, and all their academics. So you touched all very sensitive areas, and definitely if these areas are attended well, no question arises that one will not be in position to save or protect himself from the self injuries. We have to listen a lot from our other guest speakers. So with these small comments on your presentation, it was excellent. It was
been covered by all the respected and possible sectors. I congratulate you. Our greetings are with you, and we do hope that we will again and again join. Now we will not be unnecessarily disturbing Dr. Subhash Srishti ji to make your presence in our platform, though his contribution is always indebted by us. But we do hope that we will join again and again. Thank you so much. Over to Pawan Sharma ji. Thank you. Thank you, Dr. Indian. Thank you very much. Thank you, You sir. have made the day. Opening Thank you, sir. batsman, excellent. Thank you. And please do join whenever you have time. Yes, sir. Tomorrow is very serious webinar like today. That is on acute heart failure. So we will be waiting all of you again. So thank you very much. Now I would like to request Dr. Madam Purnima ji. Purnima ji, Swagatam. पूर्णिमा जी का कनेक्शन जा चुका है, मैं उनसे बात करता हूं। तब तक मैं मेरी प्रखर वक्ता ज्ञान का सागर आदरणीय वैद्य प्रोफेसर वैद्य पारुल जोशी जी को आमंत्रित करता हूं, जो प्रिंसिपल हैं वाला हनुमान आयुर्वेद कॉलेज की, गुजरात में गांधीनगर में। स्वागतम मैडम, यू मोस्ट वेलकम। मैडम वैद्य पारुल जोशी जी। Am I audible to पारुल जोशी जी? अग्निहोत्री सर, एक बार देखिए तो। हाँ, आपकी आवाज, सॉरी मैडम पारुल जोशी जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। हम आपको सेकंड नंबर पर ही बुला लेते हैं क्योंकि हमारी मैडम पूर्णिमा जी का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल हैं, तो आप अपना उद्बोधन दीजिए, हम सब इंतजारी में हैं। नमस्कार जी। जी मैडम, नमस्कार। हेलो, स्वागत है आपका। स्वागत। अच्छा मुझे बोलना है? हाँ, आप आ जाइए क्योंकि वो अभी दूसरे मैडम बीच में जो है उनका कनेक्शन अभी लग नहीं पा रहा लगता है। आप अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्योंकि चार्जर मेरे पास नहीं है और बैटरी डाउन हो रही है, आप ले लीजिए, जल्दी जुड़ जाती हूँ। अगर बैटरी बंद हो जाए उसके पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ, आप 1-2 मिनट ले लीजिए। मेरे पूर्व के वक्ता को सुन रही थी जी, और आपको तो पता है सभी को कि मेरा जो विषय है वो महिला रोग के अति संकलित है, और क्योंकि ये जाहिर मंच है तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि किसी भी देश में आज की स्थिति में, यानी कि 1 मार्च 2023 को women, girls, teenagers are not the privileged group. They are not the decision makers. They don't have the rights which a normal male enjoys in a so-called healthy society. अब हम बोले कि सेल्फ इंजरी जो है उसमें हम किस तरह बता सकते हैं, तो उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो मैंने देखा है कि 4 तरह से होता है। बीटिंग सेल्फ, तो सबको पता चल जाएगा ये अपने आप को इंजरी इन्फ्लिक्ट कर रही है, लेकिन वो जब अपने आप को नहीं मार सकती क्योंकि उसकी जिम्मेवारियां हैं और बता भी नहीं सकती, तो क्या करेगी? ग्लास तोड़ेगी, चीजें तोड़ेगी, और उसके बाद जो है वो हॉस्टाइल बिहेवियर आएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज हॉस्टाइल बिहेवियर। वो परहिंसा तक जा सकती है। फिर दूसरी जो है वो जो कुछ कलर ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही, शी डजंट हैव गट्स टू ब्रेक एनीथिंग, तो क्या करेगी? शी विल कीप ऑन स्लीपिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। कुछ भी बोल लो वो सोती रहेगी। और चौथा जो है वो शी विल, अगर ड्राइविंग उसको आता है तो बहुत हार्श ड्राइविंग करेगी, और वो अगर किसी को लग भी गया तो इट डजंट मैटर एनीथिंग टू हर। तो वो रिस्की बिहेवियर कर रही है, खुद को
खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। ये जो है वो अब हम उसको फुल ब्लोन सेल्फ इंजरी बोल सकते हैं। सेल्फ का दो मतलब होता है, खुद भी और पर भी। वो खुद और पर दोनों को इंजरी करने के दिमाग में तब आती है जब उसने ठान लिया है कि मेरा जो ये है प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड आइदर ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग हर डेवलपमेंट, या फिर मैरिज के टाइम में, मैरिज के बाद। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो फीमेल्स जो है वो ज्यादा इमोशनल होती है उनकी फिजिक्स की वजह से। दे गेट अपसेट वेरी इजीली, और इमोशनल होने की वजह से वो अपसेट भी होती है, डिस्ट्रेस भी हो जाती है, और वो सहानुभूति भी बहुत जल्दी दिखाने लगती है। इस वजह से उनमें वात विकृति बहुत देखने को मिलती है। और अगर माता सगर्भावस्था में है और उसके विचार जो है वो ऐसे अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं, तो उसके गर्भ में जब महिला गर्भ रहती है तो वो ज्यादा इमोशनल होने की या फिर इस तरह जल्दी अपने आप को कहीं किसी परिस्थिति में डालने के स्वभाव वाली हो सकती है। स्तन्यपान काल अवस्था में परसों यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने अपना वेबिनार मिस किया था और वेबिनार खत्म होने के उपरांत मैं फ्री हो पाई थी, क्योंकि आज से हमारा ट्रांजिशनल करिकुलम शुरू हुआ है, तो वो आयोजन में मैं थी, तो मैं मिस कर गई। तो मैं यूट्यूब पे उसको ढूंढ रही थी, तो उस दौरान एक वीडियो आया, माँ जो है ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। ब्रेस्ट फीडिंग करते करते उसका जो बच्चा, बड़ा वाला बच्चा है, वो बच्चे को भी वो संभाल रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही बच्ची लड़की है, दिख रहे अपने को दिखाते है कि वो बच्ची जो है वो किस तरह फीडिंग कर रही है। उसको भूख लगी है और वो दूध पी रही है, वरना माँ का तो ध्यान उसके ऊपर है ही नहीं। वो जो बड़ी बच्ची है उसको संभालने में, उसको सुलाने में लगी हुई है। तो इस तरह से जो बच्ची बड़ी हुई है, उसको भूख लगी है और उसको दूध पीना है और माँ के पास उसके लिए टाइम नहीं है। तो ये मान लेना कि बच्चा समझता नहीं है, बच्चा भूल जाता है, वो हमारी गलती है। बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझता है और बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड भी करता है। उसको पता है वो हेल्पलेस है, इसलिए हमें बर्दाश्त करता है। तो ये प्रकृति का उसको मिला हुआ वरदान भी है और वो उसके लिए परेशानी भी है। तो ये परिस्थिति में अगर बच्ची बड़ी हुई है, स्कूल में जा रही है, तो स्कूल में टीचर जो है उसको लड़कियां अच्छी नहीं लग रही है, तो वो उसको प्रताड़ित करेगी, उसको बिंज कोई कोई जरूरत नहीं है फिर भी उसको नेग्लेक्ट करेगी। चार लोगों के बीच में बोलेगी तेरे को कुछ आता नहीं, यू आर डम, तू तो यू आर गुड फॉर नथिंग। ऐसा घर का गुस्सा बच्ची पे निकालेगी। वो बच्ची कहाँ जाएगी? घर में माँ नहीं है, माँ होते हुए भी माँ नहीं है। स्कूल में गई तो शिक्षिका नहीं है, वहां एक डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटी है जो अपना घर का गुस्सा स्कूल में निकाल रही है या प्रिंसिपल का गुस्सा बच्चे पे निकाल रही है। तो क्योंकि आजकल की जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स है, मैं करीब 25 साल से देख रही हूँ, इतनी डिस्टॉर्टेड होती है ये महिलाएं। पुरुषों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, ये टीचर क्या मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं है। और ये बच्चों का अध्ययन करवाते, अध्यापन करवाते, वो मनुष्य नहीं है, वो क्या अध्यापक बनेगा? और ये बने हैं क्योंकि वे बीएड पास है, एमएड पास है। तो ये जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है उसका एक दुष्परिणाम ये है कि बच्चियां टीनेजर होते हुए विद्रोह में आ जाती है और विद्रोह नहीं कर पाती क्योंकि उसको पता है मेरे पास पैसे नहीं है, ड्रग्स की ओर चली जाती है। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेल्फ इंजरी। या फिर किसी के भी साथ सेक्सुअल रिलेशंस रख लेती है, वो भी सेक्सुअल सेल्फ इंजरी है। ये सब बिना सोचे समझे हम लोग सिर्फ अपने आप को प्रताड़ित करना यानी फिजिकल इंजरी डालना, इसी को सेल्फ इंजरी समझ रहे हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट कर रखे हैं कि मैं कहीं पे भी गर्भ संस्कार का लेक्चर देने जाती हूँ तो बहुत शर्म के साथ बोल रही हूँ मैं कि मैंने बोलना शुरू किया है
या शादी न करे या बच्चे पैदा न करे, लेकिन जिस बच्चे को आपने पैदा किया है वो आ गया है पृथ्वी पे, वो उसकी गलती नहीं है। टेक केयर ऑफ द बॉर्न चाइल्ड, इफ यू कांट टेक केयर यू डोंट हैव राइट टू लिव। ऐसा बोलना शुरू किया है। इतनी भयंकर परिस्थिति ला खड़ी कर रखी है। पेरेंट्स के होते हुए बच्चे अनाथ है, टीचर के होते हुए बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वे वहां जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए, सीखने को नहीं मिल रहा है, प्रताड़ित हो रहे। जॉब करने जा रहे हैं, वहां पे जॉब तो करते हैं, दिल लगा के दिमाग लगा के अपना आत्मा रेड़ के जॉब करते हैं, बॉस खुश नहीं है और को वर्कर है वो जो है वो ऐसा समझता है कि ये कहाँ जाएगी, उसको जॉब की जरूरत है तो उसको प्रताड़ित करो। और वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगी बच्ची, या उसको सकम कर जाती है या फिर कहीं और रास्ते पे चली जाती है। तो ये जो परिस्थिति हमने खड़ी कर रखी है, माफ करना लेकिन ये वास्तविक स्थिति है। और जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं साहब, जिस तरह के बच्चियां आती है पढ़ाई करने के लिए, आज की बात करूं मैं, ट्रांजिशनल करिकुलम का फर्स्ट डे था, उसमें मेरी सीनियर बच्चियां जब उनका ट्रांजिशनल करिकुलम था, इतनी इतनी समी आई हुई थी। व्हाट दे डिड, क्योंकि ये 8 महीने से मेरे साथ थी, तो मैं उन बच्चियों को ये महसूस करवा रही थी कि घर का जो भी एटमॉस्फेयर है, आप कॉलेज में आप यहाँ सुरक्षित है और कुछ भी आपको शेयर करना है आप मेरे से शेयर कर सकती है। तो बिकॉज ऑफ दैट बच्चियां शेयर करना शुरू की, बच्चियों के अंदर इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, वे एक दूसरे के साथ जिस तरह के कपड़े पहन के शुरुआत में आई थी, उन्होंने खुद ने भारतीय पहनावा चुना और वे पहनना शुरू किया। आज का उनका बिहेवियर देख के भरे हॉल में मैंने उनको बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू माय चिल्ड्रन। तो लेकिन ये 8 महीने की मेरी मेहनत थी। ऐसे मूर्ख कौन होगा जो दूसरों के लिए मेहनत करेगा भाई। जो भी ये सुन रहा है इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल दे। किसी का बच्चा है लेकिन है तो ह्यूमन बच्चा। Why? How can you afford neglect a human being? दुर्लभ मनुष्य जन्म यह, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता जड़, भोरे न लाग गई डार। ये मनुष्य जन्म को विफल करने की शिक्षा हम भारतीय कैसे दे सकते हैं, कैसे वो होने दे सकते हैं? तो क्या आयुर्वेद इसमें मदद कर सकता है क्या? तो पहला तो सूत्र ये है जो मेरे आगे के वक्ता बोल चुके हैं, उसमें मैं थोड़ा संस्कृत डाल दूंगी। लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। अब यहाँ पे हम तो बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं सब। तो 10 वर्षाणि ताड़येत यानी 6 साल का बच्चा हुआ, मानना शुरू कर दिए। भाई ताड़ेत का मतलब यह है कि जिस तरह कुंभ का निर्माण करते हुए हम कुंभ को थपाट लगाते हैं, अंदर बांस हार दे बाहर बाए चोट, तो उसमें मारना नहीं है भाई, उसको घड़ना है, उसको निर्माण करना है उसका, तो उसको गाइड करना है। लेकिन अगर 5 साल तक आपने उसको लालन के साथ पालन किया है तो ही आपको ये राइट मिलता है। और ये जो हम बाहर से उसको घड़ रहे हैं लेकिन अंदर हम सपोर्ट दे रहे हैं, ये कोई नहीं देखता है। ताड़ेत यानी मारना, बराबर मारो। अपना गुस्सा, अपनी वाइफ का गुस्सा, बॉस का गुस्सा निकालो बच्चे पे। इस तरह पीटते हैं बच्चों को, खास करके बच्चियों को ऐसे उठा के फेंकते हैं। अरे मार डालना भाई, क्यों जिंदा रखता है उसको, ऐसा बोलने की इच्छा हो जाती है। तो ये जो ब्रूटल राक्षसी बिहेवियर है वो नहीं करना है, उसको घड़ना है। और अगर ये आपने किया है तो सिर्फ तभी प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। 16 साल का होगा तो बच्चा, पुत्र शब्द इसलिए दिया है क्योंकि वो दोनों का पर्यायवाची है। पुत्र में एक पुत्री है, जगत पितरौ, तो उसमें माता च पिता च, यही संधि यहाँ भी लागू होती है।
बिना सोचे समझे बोल दिया, सिर्फ पुत्र का देखना है, पुत्र तो अपने आप। मैं in my house where I was never kept as a daughter-in-law, I was a daughter in my ससुराल। मेरे सास ससुर मुझे बहुत बढ़िया तरीके से रखे हैं। मुझे कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने कभी ससुराल महसूस ही नहीं की है। तो ये होते हुए भी मेरी सास बोलती थी, दीकरी तो उकरडानी जेम वधे, एनु कई ध्यान रखवानुं न होय। ऐसा नहीं है भाई, बट्टे का को तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और बेटी का अगर ध्यान नहीं रखा तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स सोसाइटी में, फैमिली में क्रिएट होते हैं, जो आगे चल के इररिपेरेबल लॉसेस खड़े होते हैं, क्योंकि द सेकंड जनरेशन इज अफेक्टेड। तो अपने को मित्र सखी जैसी बेटी चाहिए, तो जब से उसका जन्म होने का समझ में आया है तब से उसके साथ मृदु भाषा में बातें करनी है। बच्चा तुझे क्या चाहिए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, बच्चा तुझे जो भी चाहिए खुल के बोलना, तेरी माँ तेरे साथ है। दैट इज गोइंग टू हेल्प लाइक एनीथिंग। बच्चा अपनी जान कुर्बान कर देता है। साहब, मैं खुद भी एक माँ हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, एक बहू भी हूँ, अब तो सास भी हूँ। तो सभी रोल्स में मैंने देखा है कि अगर बच्चा इतना बोल दिया, बच्चे जान फिदा कर देते हैं। इतना क्यों नहीं बोल सकते, अपनी वाणी में मधुरता क्यों नहीं ला सकते भाई। तो ड्रग्स हम कौन सी दे सकते हैं, तो ऐसा बोलते हैं मेध्या विशेषेण तु शंख पुष्पी, लेकिन शंख पुष्पी कफ बढ़ाती है। तो पित्त प्रकृति वाली व्यक्ति है और अगर हमने शंख पुष्पी दी यष्टि मधु के साथ तो रिजल्ट मिलेगा। कफ प्रकृति में वो रिजल्ट नहीं देगा। कफ प्रकृति में हम वच्छा दिया, जटामांसी दिया, ज्योतिषमती दिया तो रिजल्ट मिलता है। तो वो ज्यादा सोने की बजाय, ज्यादा इंट्रोवर्ट होने की बजाय, ड्रग्स की ओर जाने की बजाय वो कुछ क्रिएटिव करने की दिशा में जाएगी। बच्चियों में अंध बल प्रकृति ने इतना दे रखा है साहब, हम कल्पना नहीं कर सकते। ये इतना इतना सहज आती है। तो मैंने ये जो मेरी फर्स्ट बैच थी ना साहब, इट वाज अवर फर्स्ट बैच, कॉलेज की फर्स्ट बैच थी। तो मैंने 2 बच्चियों को गले लगा के प्यार दिया है साहब। इतना सहज आती है बच्चियां, अपने माता पिता को इतना माफ करती है कि अपने आप को वी फील गिल्टी, इतना सहते हैं ये लोग। तो वाई हम इस परिस्थिति में क्यों रखे उनको। ये जो है वो जटामांसी जो है, भूत जटा, इसके ऊपर हम बहुत कम काम किए हैं। अगर हमको लगता है कि फुल ब्लोन सेल्फ इंजरी का केस हो गया है, रिस्की बिहेवियर करना इसने शुरू कर दिया है, वो अपने आप को मारना शुरू कर दिया है, इस अवस्था में जटामांसी का तावीज बना के उसको दे। अगर वो नहीं करती है तो उसका जो पिलो है उसके अंदर उसको सी देते हैं, तो भी हमें रिजल्ट मिलता है। और अगर खाने में उसको एक पिंच जटामांसी पाउडर दिन में 3 बार दे दिया साहब, वो भूल जाएगी कि इसने कभी ऐसा बिहेवियर किया था। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। दूसरी एक चीज है जो मैंने कई स्टूडेंट्स में करवाई है। तो मेरी एक स्टूडेंट ने अपने को स्टूडेंट के साथ शादी की थी। शादी करने के बाद दोनों पैर पड़ने आए, तो वो जो लड़का था वो मेरा काफी जड़वादी था। वो नारी के लिए उसको कुछ सम्मान ऐसा नहीं था। वो मेरे साथ भी जब पढ़ता था तो ब्लंट बिहेवियर करता था, लेकिन मैं उसको टॉलरेट नहीं करती थी और बोलती थी, देख बेटा ये इज नॉट टॉलरेबल, तेरी जो बहू आएगी वो इसको टॉलरेट नहीं करेगी, सुसाइड करेगी, भाई अपना बिहेवियर सुधार। और उसके साथ ये लड़की ने शादी की थी। तो मैंने उसको बोला, कृतिका संभालना, ये बहुत ही जड़मती लड़का तूने चुना है, तो तू ध्यान नहीं रखेगी तो तू परेशानी में आ जाएगी, इमोशनल बिल्कुल मत रहना। अपने आप को उसने इतना मजबूत कर लिया और इतनी आगे बढ़ गई, जीपीएससी क्लियर करके क्लास 2 मेडिकल ऑफिसर बन गई। और हस्बैंड जो है उसको भी इतना तैयार किया और उसको साथ में ही रखा है, दे आर स्टेइंग टुगेदर। लेकिन लड़का जो है
वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा है, दैट इज थैंक्स टू विटामिन सी। तो ये होता है। और दूसरी एक बात है कि मंदिर का जो घंट है ना कांस्य का, हम तो ब्रास बोलते हैं उसको, ब्रास जो है उसका घंट का जो टंकार है वो ऐसे केसेस में बहुत हेल्प करता है। लेकिन वो घर में कैसे लाए? तो घर में जो दिन में 3 बार अगर हम संध्या काल में वो घंटी सिर्फ 1 मिनट के लिए भी बजा ले तो उसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव होता है। और अगर वो भी नहीं कर पा सकते हैं तो वो पायल में जो घुंघरू लगाते हैं ना, उस तरह की घुंघरू उसके आसपास रखे। तो सिल्वर के घुंघरू का आवाज अलग है और ब्रास जो है उसका आवाज अलग है। ब्रास का आवाज हमें चाहिए। तो मैंने कई घरों में ऐसा करवाया कि ब्रास का वो घंट आता है उसको लगाते हैं। जितनी बार दरवाजा खुलेगा उतनी बार आवाज होगा, जितनी बार बंद होगा उतनी बार आवाज होगा। तो इस आवाज के जो है उसकी भी इफेक्ट घर में रहने वालों पे होती है। और जो एक दूसरे को टॉलरेट न करने की हालत में फैमिली आ जाता है, उसमें से एक दूसरे को टॉलरेट भी करते हैं, सौमनस्य बना रहता है और अपनेपन का अनुभव होता है। तो ये जो है वो हम सोसाइटी के हर कोई जिनका बच्चा नहीं है वे भी ये समझ ले कि मेंटल डिसऑर्डर है या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये तो महिला है, ये तो मेनोपॉज में है, ये मिनार्की में है, ये मेंस्ट्रुएशन में है, ओव्यूलेशन में है, प्रेग्नेंट है। ये सब सोचने के बजाय हम ये सोचे कि महिला है, इमोशनल है, उसको इमोशनली हम छेड़ेंगे नहीं। दूसरी एक बात जो मैं बोलना भूल गई कि सूतिका अवस्था के अंदर अगर सूतिका को किसी वजह से शॉक लगता है, इमोशनल शॉक ज्यादा करके लगता है, तो विभ्रम में चली जाती है। और वो सिजोफ्रेनिया जो है वो इररिपेरेबल है, उसमें देयर इज नो टर्निंग बैक। मैंने 2 ऐसे केसेस देखे हैं। अगर फैमिली केयर लेता है तो दे डाई पीसफुली, बट दे नेवर लिव इन नॉर्मल हेल्दी लाइफ। वो भ्रमित अवस्था में ही जीते हैं और वो अवस्था बहुत ही पीड़ाकारक रहती है। तो ज्यादा करके जब फीमेल लेबर में जाती है तो हस्बैंड और इन लॉज और जो भी फैमिली मेंबर है, कई बार तो माता भी कारण बन जाती है। वेरी पॉजिटिव मदर्स क्रिएट मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो जब वो जा रही है लेबर में, प्रसव के लिए जा रही है, तो हम सब फिजिशियंस है इतना ध्यान रखे कि अपना पेशेंट जो है वो लेबर पेन्स शुरू होने से पहले ही डॉक्टर के पास आ जाए। कोई भी सगा संबंधी उसको नहीं मिल सकता, अकेला हस्बैंड रहेगा और वो भी तब रहेगा जब हमें विश्वास है कि ही इज नॉट गोइंग टू टॉर्चर आवर पेशेंट। और सूतिका काल जब उसका आता है तो सूतिका काल में भी हम ये देखेंगे कि उसको कोई हैवी डाइट ना दे दे और कान में ना बोल दे, देख लड़की जनी है, कर तो आ, देखते हैं तू कैसे जीती है। तो ये हालत न हो उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। समाज हमारा मिडिवियल एज में पुनः चल चुका है। हम साइंस में तो आगे बढ़े हैं लेकिन मानसिक अवस्था हमारी काफी बिछड़ी हुई है। तो ये अवस्था में समाज को जागृत करके पुनः नॉर्मलसी में समाज को लाना है ताकि ये सेल्फ इंजरी का दिन मनाना न पड़े और इस तरह बच्चियां पीड़ित न हो और बच्चियां स्वस्थता पूर्वक, बच्चियां, महिला, बुजुर्ग सभी जो है एवरीवन कैन लिव हेल्दीली, सुखायु हितायु पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। क्योंकि जहाँ आयुर्वेद है वहाँ आनंद है, वहाँ सुखानुभूति है, हितानुभूति है, विश्वास है और वही हमें सबको सिखाना है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू पावन सर, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। आवाज मेरी खराब है तो मैंने आज मेरे ट्रस्टी ने मुझे डांटा, आप ऐसा करेगी तो आवाज कब सुधरेगी आपकी, टेक केयर ऑफ योर थ्रोट, ऐसा मुझे मेरे ट्रस्टी ने आज डांटा है।
तो आवाज तो मेरी खराब है, आपने मुझे टॉलरेट किया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और होली का होलिकोत्सव रंगोत्सव आ रहा है, तो उसकी सभी को शुभकामनाएं। रंगोत्सव मनाए और मेरी तरह कंठ बिगाड़े नहीं। थैंक यू जय हो, एवरीबॉडी। जय हो, जय हो। Much beyond expectations, madam. Much beyond expectations. Salute, salute to your flow, content, speech, fluency. What attributes I can add? Really great. Jai Bholenath. बहुत अच्छा. Agnihotri sir. Now session will be open after your. Thank you, Professor Sharma ji. Special thanks to Madam Professor Parul Joshi ji. Please don't self-injure your throat, as you confessed by your own that you are not having your throat functioning well intact, and still you are going on by delivering your lecture to the congestional syllabus students, and again here we have disturbed you. So please don't get yourself self-injured. This is our humble request. What sector you touched? Really, being a person of gynae and ops, you are having always a great target to your coming patients, of course, in a form of teenagers or any female being. But the last sentence which you told is really a great message to world. जहाँ आयुर्वेद है वहाँ आनंद है. This is what I learned and noted in a very important manner, that this is what the essence of Ayurveda is. जहाँ आयुर्वेद है वहाँ आनंद है, तो उस स्थिति में सुखायु हितायु तो चलेगा ही चलेगा. और आपने कहा जरूर कि इस समय हम लोग फिजिकली या साइंटिफिकली एडवांस हुए हैं, मेंटल इमोशनली थोड़ा नहीं एडवांस हो पाए हैं, बल्कि अभी भी जिसको कहते हैं कि एक कंजर्वेटिव एरा से गुजर रहे हैं. थोड़ा उसमें भी सुधार हुआ है, मैं समझता हूँ आपके स्टेट में भी, दोनों जगह, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी और हर जगह. अब जो फीमेल वेल टू डू हो गई हैं, मतलब 15 साल 20 साल की हो गई हैं, कॉलेज स्टूडेंट हो गई हैं, वो खुद इतना स्ट्रांग हुई हैं कि वो अपनी बात कह पा रही हैं और बोल्डली खड़ी होती हैं, मोटरसाइकिल चलाती हैं, हर फैशन, हर मने मैंने जितने भी उनके ड्रेसअप सब करते हैं. तो इसलिए कह पाना कि हम मेंटली वीक हो रहे हैं. मोर ओवर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेल पैदा हुआ या फीमेल पैदा हुआ, मैं समझता हूँ धीरे धीरे अब न्यूक्लियर कपल्स एक या दो ही अपने प्रोजनी चाइल्ड ले पा रहे हैं. तो शायद ये भी अंतर काफी कुछ कवर अप हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां ही पढ़ने में बहुत होशियार होती हैं. हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज तो महिला आयुर्वेदिक कॉलेज होते जा रहे हैं, और दूसरे भी इंजीनियरिंग में सब जगह वो इतने अच्छे से निकल रही हैं कि सभी अच्छी पोस्टें में हो रही हैं, मेट्रो चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं. तो मैं समझता हूँ शायद आपको भी इसका अच्छा अनुभव है. बट स्टिल लड़कियों को, बच्चों को, सबको अपने घर में भी अपनी बात कहनी चाहिए. अपनी उनकी कोई भी मेंटल एगोनी है या कोई भी चीज उनके किसी भी सीनियर ने, पेरेंट्स ने या सोशल कांटेक्ट में आने वाले लोगों ने अगर उनको मेंटली डिस्टर्ब किया है, तो वो उसको कम्युनिकेट करें, जिससे कि उसका देन एंड देयर समाधान हो सके. और बहुत ज्यादा टेलीविजन और सोशल मीडिया से अपने को डिस्टर्ब न महसूस करें. शायद आपका टोटल कम्युनिकेट करने का सेंस था. आपके प्रेजेंटेशन के साथ ही हमारी चूंकि थर्ड स्पीकर मैडम मिस पूर्णिमा साइकोलॉजिस्ट जो है वो बड़ोदरा से नहीं जुड़ पा रही हैं, तो उस कंडीशन में जैसा कि प्रोफेसर पवन शर्मा जी ने निर्देश दिया है, हम सेशन को ओपन करते हैं. क्योंकि सेशन आज टॉपिक इतना इंटरेस्टेड है कि मैं सोचता हूँ मुझे सबसे ही अच्छे फीडबैक मिलेंगे. और मैं शुरुआत करना चाहूंगा नितिन रुमालिया जी से, क्योंकि मैं हमेशा जब भी उनको सुनता हूँ एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया फील्ड जो है उनके डिस्कशन का हमें मिलता है. और ये हमारे सबके लिए अच्छा हो जाता है. हमारी वेबिनार का जो कंटेंट्स है ये यूट्यूब पर भी रहते हैं और बाद में भी आर्काइव में रहते हैं. जब भी जो चाहे इसको यूज कर सकते हैं. पवन सर अगले दिन का प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक वो दिखला रहे हैं, कल डॉक्टर डीसी कटोच रहेंगे सर. जी जी. और डॉक्टर श्याम सुंदर काकानी जी रहेंगे. डॉक्टर अजहर जबीन रहेंगी जामिया यूनिवर्सिटी से, यूनानी की ओर से. देव विपासना चिकित्सा की ओर से डॉक्टर गौरव शुक्ला जी रहेंगे. और फिर रात को 9 बजे के बाद डॉक्टर आशुतोष पटनकर जी
कार्डियक एक्सपर्ट जो हैं भारतीय विद्यापीठ के एक्स प्रोफेसर, वो पुणे से रहेंगे। तो मैं आप सबका सादर आमंत्रण करता हूं, कल जरूर ज्वाइन। बहुत बढ़िया। आप प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला जी का जो विपाश है, इनका कांटेक्ट जरूर मैंने पब्लिक कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। सभी कोई जो किसी भी स्टेज की एलिमेंट से सफर कर रहे हैं, वो चाहते हैं उनको दूरस्थ भी ये इसका कोई थेरेपी का लाभ मिल सके, तो जनमानस का उनके प्रति उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और आज भी जो लोग जुड़े हैं हमारे पास, जिनके रिकॉर्ड है, ठीक है, बाकी लोग अपना हमेशा मेरी अपील है कि वो अपने कांटेक्ट हमारे चैट बॉक्स में डालते रहेंगे, तो हमसे वो आगे ज्वाइन करने के लिए आसानी रहेगी। तो आज के इस पैनल डिस्कशन में हम आमंत्रित कर रहे हैं सबसे पहले डॉक्टर नितिन उर्मालिया जी को, और हम चाहेंगे कि उनको उस क्षेत्र को जरूर स्पर्श करें जो उन्होंने अपने अनुभव में लिए हैं, विशेष रूप से क्योंकि उनके पास भी सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल केसेस के मामले में, अदरवाइज भी एडिक्शन के मामले में, और चूंकि वो टॉक्सिकोलॉजी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उसके ही प्रोफेसर हैं, तो वो बता सकते हैं कि सेल्फ इंजरी के केस में वो कौन सी एज हुआ करती है जहां पर कि लड़का या लड़की भ्रमित होते हैं, मैंने टीनेजर्स या उसमें ही, और क्या कुछ उनको इस सेल्फ इंजरी के मामले में एक बेस्ट सपोर्ट हमारे बौद्धिक दृष्टिकोण से, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, रेमेडियल दृष्टिकोण से हो सकता है। डॉक्टर नितिन उर्मालिया जी का स्वागत है, नमस्कार। Thank you, sir. Thank you to present my views in front of you. तो नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर इसमें जैसा कि बहुत अच्छा टॉपिक था, मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया, तो इसमें हम सर देख सकते हैं कि प्रिवेंट फ्रॉम सेल्फ इंजरी, ये मेंटल टेंडेंसी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम कह सकते हैं कि हमको मेंटली इतना स्ट्रांग हम बनाए कि हमारी मानस चिकित्सा भी होती है, सत्व वजह। तो यहाँ पे दैव उपाश्रय, युक्ति उपाश्रय, सत्व वजह चिकित्सा पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और टेंडेंसी के मामले में मैं थोड़ा कुछ क्लूज देना चाहूंगा। जैसे हमारी हर व्याधि चाहे ज्वर से स्टार्ट हुई है हमारी संहिता में, तो निज आगंतुज ये ज्वर भी होते हैं, उसमें भी अभिघातज, अभिचारज, अभिशापज, अभिसंगज भी होते हैं। तो ये अभिघातज का उल्लेख जरूर आया है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो कि हम जानते भी हैं, अगर आपको कहीं इन्फेक्शन हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो बड़ा जल्दी इन्फेक्शन होता है, और मॉडर्न डॉक्टर उसके तुरंत हाई फाई एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, और वो सिर्फ इसी के लिए, इन्फेक्शन रोकने के लिए। और इन्फेक्शन का सबसे अच्छा रिएक्शन हमारी बॉडी में फीवर आना, मतलब आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ पैथोजेंस पहुंच गए हैं, और उसका रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दे रही है कि WBC उतना लड़ नहीं पा रहे। तो इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा कि हमारे कुछ शंका विष और सर्पांगाभिघात विष, दो चीजों का उल्लेख है। शंका विष हमारे बोला है, चरक आचार्य के द्वारा शंका विष बोला गया है। तो शंका विष एक ऐसा था, दुरंधकारे विद्धस्य किंचित विष शंक्या, कि जब अंधकार में कोई व्यक्ति जा रहा है, कुछ चीज चुभ गई, तो चुभने को वो ऐसा समझता है कि जैसे सांप ने काट लिया हो, जबकि सांप ने कहीं दूर दूर तक नहीं काटा, ना ही कुछ ऐसा हुआ है। तो सिर्फ साइकोलॉजिकल की वजह से सारे लक्षण वैसे ही उत्पन्न होते हैं जैसे कि सांप के काटने से होते हैं। थोड़ा सा कम अपन टॉक्सिक कह सकते हैं सांप, जो ज्यादा पॉइजनस नहीं होते, वैसे लक्षण डेवलप होने लगते हैं। ये सारे लक्षण डेवलप होने की वजह हमारा मस्तिष्क है, वो मानस रूप से वो एक्सेप्ट कर लेता है कि एक सांप ने हमें काटा है, तो उसके सारे फीचर्स, सारे बर्ताव वैसे ही होने लगते हैं। तो एक शंका विष का बहुत अच्छा हमारे चरक के द्वारा वर्णन किया गया है। तो मैं चूंकि अगध में हूँ, इसलिए मैं अगध पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को लूंगा। तो शंका विष में बताया गया, सीता वैगंधिको मधुरम, मतलब आपने सीता वगैरह करें, काउंसलिंग करें, वैगंधिक रखें, इन सब की वजह से जो है सांत्वना दें, उसको सांत्वना दे कि नहीं काटा है सांप ने, और सांप ने नहीं काटा है। जब सांत्वना कंफर्म हो जाए तो उसको सीता का पान कराएं, थोड़ी इम्यूनिटी बढ़े, थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल बढ़े, मस्तिष्क अच्छे से काम करे, थोड़ा भय नहीं डेवलप होने। ये बहुत बड़ा अच्छा उल्लेख है। और इसी कड़ी में सुश्रुत ने बोला है सर्पांगाभिहत, सर्प अंग अभिहत। तो जैसे सर्प का अंग, सर्प का कोई हिस्सा ये रियल में होता है, ये सुश्रुत ने जो बोला है। चरक ने शंका विष बोला, लेकिन ये रियल में बोलते हैं ऐसा कुछ होता है। तो सर्प का कोई अंग बाय मिस्टेक हमारे पैर में लग जाता है, तो सांप सिर्फ अपनी पूंछ या अपने उस अंग को हटाकर निकल जाता है। तो इतने निकल जाने की वजह से हम सांप को देख लेते हैं कि सांप जा रहा है और अभी हमारे पैर में टच किया था। अब हमें एक मन में फिर से वही धारणा बैठ जाती है कि सांप ने हमें काटा है।
दर्द तो नहीं हुआ, कोई निशान तो नहीं दिख रहा अभी, पर काटा जरूर है, काट के भागा वो, क्योंकि सांप डिफेंस करते हैं। तो ये ऐसी कड़ी भी सर्पांगा विहत भी आया है। तो सर्पांगा विहत में आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर सांप का मुंह वगैरह हो सकता है, सलाइवा भी टच कर गया हो, सिर्फ उस हिस्से को सोप से, डिटॉल सोप से वॉश कर देना है, और कुछ नहीं होने वाला आपको। लेकिन यहाँ पर अगर वो मन से डर गया, वो मन जी। से उसने विषाद, तो उस तो मैं यहाँ पर आ रहा था, सर ने मुझे मौका दिया। तो हमारे विष में भी, विष बहुत जहरीला होता है, और विष निदान में हम पंचक में देखें, सव्यभिचार व्यभिचारी प्रधानिक, प्रधानिक करके एक निदान है इसका, सन्निकृष्ट विपृष्ट से व्यभिचार प्रधानिक, प्रधानिक निदान विष को माना गया है। किसी भी, तो ये कंडीशन शंकर विष और सर्पांगा विहत, कोई इंजुरी नहीं हुई है, लेकिन हमारे मन में बैठने की वजह से सारा कार्यक्रम वैसा ही करना पड़ता है डील, और सांत्वना बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। लेकिन अगर पेशेंट कई बार बहुत ज्यादा भीरू हो जाता है, भीरू पेशेंट रहता है, बहुत ज्यादा डर जाता है, तो मैं कह नहीं सकता, बहुत अंतिम स्टेज तक भी जा सकता हो डर के मारे। तो ऐसे को सांत्वना दें, और मैं यही उल्लेख करना चाहूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बिल्कुल वही चीज की, और कई बार कई प्रेजेंटेशन में, कई काव्यों में, स्थानीय शास्त्रों में ये बात आई है, हमारे ग्रंथों में आई है, रत्नावली में आई है, कि आता है ना, रज्जो रज्जो हेर भ्रमा, यस रज्जो यस है यस जो भ्रम वाली बात बन गई, मुझे एकदम स्ट्राइक आ गया कि रज्जू को अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप के रूप में मान लेना, और ये भ्रम पैदा करना कि सांप का स्पर्श हो गया है, दंश हो गया है, और वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना फास्ट होता, आशुकारी होता है, विष, असली विष से भी आशुकारी होता है, और माने वही सब हार्मोन्स और सिस्टम्स, हमारे गुड एंड बैड जो हार्मोन्स है वो रिलीज होने लगते हैं, और क्लिनिकल सिम्टम्स भी आने लगते हैं। ऐसे में सांत्वना चिकित्सा, धैर्य के लिए देना, और उसको एनर्जेटिक चीजें देना, और उस एटमॉस्फेयर से दूर ले जी जाना, सर। प्रकृति की तरफ लाना, और वो माने दुग्धपान है या और भी है, उसको ध्यान बटाना, उसकी ये इस डिस्कशन के चैनल को तोड़ना शायद उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वो रियली में सेल्फ इंजर्ड है। वो उसने अपने मस्तिष्क को मौका दिया है कि वो एक जी भ्रम जी से जी इंजर्ड हो गया। तो आपने जिस क्षेत्र के आप हैं उसमें आपने अच्छे स्टेज को टच किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो जुड़ते ही हैं, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है आप जुड़ते रहिए और अपना डिटेल्स थैंक यू देते रहिए। सर। सर आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। ये सॉरी, मैं प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी को इस आशय से इनवाइट करना चाहूंगा कि ऐसे कोई पेशेंट्स जो सिम्टम्स पे साथ में नहीं आए हैं, लेकिन कोई ना कोई सेल्फ इंजर्ड का कारण बने हैं, जो उनके प्रोफेसर शुक्ला जी के द्वारा साइकोलॉजिकली एसेस कर लिया गया होगा। जैसे कि कहावत है, हचिंसन भी कहता है कि ओपीडी में कदम रखते ही पेशेंट की चाल और पेशेंट का स्टेटस बता देता है कि वो किस डिजीज से सफर कर रहा है, लाइक दैट। तो मैं उनके अनुभव का आनंद लेना चाहूंगा। डॉक्टर निशांत शुक्ला जी का स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज का टॉपिक जो है ये सबसे ज्यादा उपयोगी है, और ये एक प्रकार से आयुर्वेद में उन्माद से ही रिलेटेड है, भूतोन्माद से। अब भूतोन्माद की चिकित्सा में त्रासन और ताड़न, ये दो जो है चिकित्साएं हैं, और विपरीत चिकित्साएं भी काफी जो है मानस दोष के अनुसार रोगी को हम देते हैं। यहाँ पर सभी जो है वो दोनों वक्ताओं ने इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया है कि कोई नया पॉइंट जो है वो एडिशन करने का नहीं है।
केवल एक यहाँ पर मेरी जो शंका है वो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम ये करते हैं, हमारी प्रोफिशिएंसी हम इस प्रकार से बढ़ा देते हैं, तो क्या हमें वो लीगल राइट्स और लीगल प्रोटेक्शन मिलेंगे? त्राड़म हमें करना है, सुसाइडल टेंडेंसी का पेशेंट अगर हमारे पास आता है, और ये इसलिए मैं अभी जो है ये पूछ रहा हूँ क्योंकि शर्मा सर NCISM मेंबर है और वो इस पर जो है वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट पर्सन अभी के वेबिनार में जो जुड़े हुए हैं उनमें, कि वो इस पर जो है वो लीगलिटी की कमेंट कर सकते हैं। क्या हमें जो है वो लीगल प्रोटेक्शन मिल सकती है अगर हम ऐसे केसेस को ट्रीट करते हैं तो? सर आप इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं, क्षमा करें बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आजकल आप देख रहे हैं देशव्यापी चर्चा परिचर्चा और चल रहा है हमारे सुंदरकांड के एक चौपाई के सिर्फ तारण शब्द पर। तो उस ताड़न पर लीगेसी बदली आपको समझाने और सुधारने और उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, जो कि हमारी ट्रांजिशनल सिलेबस में भी आ रहा है। हम कहना तो वही चाहते हैं, वहाँ अभिप्राय यही है कि बिना इंजरी पहुंचाए सफरर को मोटिवेट कर सकें। भाव यही था और यही बात खुद माने मर्यादा पुरुषोत्तम के पूर्वज की हैसियत से सागर ने स्वयं स्वीकार करते हुए बात कही थी। उनका भाव यही है। बेशक तुलसीदास जी को लिखना पड़ गया, तुलसीदास जी का अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये देव पिता शंकर जी और सभी उनकी बुद्धि से ऊपर की चीजें हैं, ये व्यक्ति को नहीं रहने चाहिए। तो मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार से बिना इंजरी पहुंचाए सुधार के कोई भी अगर अपील या अप्रोच हो सकती है तो हम उस चर्चा को करें। तो हमें तो मानव की सेवा करनी है, तो आपकी अप्रोच बताइए इसमें क्या हो सकता है। ये सर इसके लिए मैंने इसको अभी जो है वो पॉइंट आउट किया। इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह जो है वो शॉक थेरेपी में ये देते हैं, और कुछ मेडिसिन साइकोट्रॉपिक मेडिसिन भी जो है ये हमारे पास है। कल ही हमने जो है वो, कल नहीं अगले दिन हमने भंगा और अफीम दोनों पर चर्चा की थी। और ये उपयोगी इसलिए हो जाता है कि हमारे पास अगर ऐसी चीजों निकाल दे तो हमारे पास केवल सर्वगंधा ही बचती है कि जो थोड़ी बहुत जो है वो ट्रांस को लेकर के आती है, पर उसकी मर्यादा है कि हम उसको बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। अगर पेशेंट सुसाइडल टेंडेंसी उसमें हो गई है तो हमें उस समय उसको जो है वो ट्रैंक्विलाइजर्स भी देनी पड़ेगी, उसको काउंसल भी करना पड़ेगा, और उसको जो है वो हार्श शब्दों में भी उसको जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमें बताना पड़ेगा। ताड़न इन दैट फॉर्म, नॉट टू हिट द पेशेंट बट टू काउंसल द पेशेंट विद द हार्श वर्ड्स। तो ये सभी चीजें करने पर अगर पेशेंट को ये सुसाइड करता है या अपने आप को हार्म करता है तो हमें किस प्रकार से अपने रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे और हमें किस प्रकार से उसको जो है कौन कौन से हमारे राइट रहेंगे एज ए फिजिशियन, वो हमारे कौन कौन से राइट रहेंगे। क्योंकि आज मीडिया भी जो है ये गलत नहीं है, पर अगर ये कोई भी ऐसा एडवर्स किस्सा बनता है आयुर्वेद के साथ, आयुर्वेद फिजिशियन अगर ये ट्रीटमेंट दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में किस प्रकार से उसको रिकॉर्ड रखना, उसको कैसे डिफेंड करना, और लीगलिटी जो है वो कहाँ पर है, कब अप टू विच कंडीशन हम ट्रीट करेंगे, और कब जो है वो उसको जो है वो हमें रिफर करके, क्योंकि ये तो चरक में भी बात आती है कि या वहां पर चरक ने काफी सारी जगह पर तत्र धर्मांतराणाम अधिकार करके उन्होंने लिखा है कि भाई ये कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो उसको जो है वो शिफ्ट करो। उसी प्रकार से जो है वो अगर कोई ऐसी प्रोसीजर कर दी है तो राज्याज्ञा के बाद ही जो है ये करना है। तो ये चीजें हम प्रैक्टिकली ये फेस करनी पड़ सकती है, तो हम वो किस प्रकार से करेंगे। आज ये एक इम्पोर्टेंट डे है, और अगर आयुर्वेद को हमें एस्टैब्लिश करना है एज अ पैरेलल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो इस चीज को भी थोड़ा अगर सर गाइडेंस हमें दे तो ये अच्छा होगा। सर आपने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू उठाया, और मैं समझता हूं कि इस पॉइंट को अगर हम इस रूप से लें कि एक प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश कर लिया जाए या कोई एक स्ट्रीमलाइनिंग कमेटी बने आयुष मंत्रालय की तरफ से, और विशेष रूप से अपने ग्रंथों के संदर्भ को का उपयोग करते हुए, जैसे आपने कहा,
तो उस स्थिति में मानस लोगों के लिए जो शब्द आए हैं, चरक संहिता में आया है कि मानसो ज्ञान विज्ञानम देर स्मृति समाधि भी। तो ज्ञान और विज्ञान जब देंगे तो वहां तो एग्जाम्पल्स देंगे, प्रोसीड्योर बताएंगे, लेकिन जब हम समाधि की बात जब करेंगे तो वहां पर आपने कहा कि हम ट्रैंक्विलाइजर दे सकते हैं, हम हिप्नोटाइज कर सकते हैं, हम जटामांसी या भूत दे सकते हैं। तो वो हमें किस डोज में, किस स्टेज पर, कितने सिम्टम्स की इंटेंसिटी पर दें और उसका रिकॉर्ड रखें कि मैंने डे 1 को जब दिया था तो पेशेंट्स के ये एजाइल सिम्टम्स थे, ये अनकंट्रोल्ड सिम्टम थे और वो फर्दर इंजरी, सेल्फ इंजरी कर सकता था। वहां पर पैरामीटर ले लेते हैं, इसलिए हमने इतने मिलीग्राम या इस कंसंट्रेशन में या इस रिकॉक्शन में, इवन मैडम पारुल जोशी तो तावीज तक की बात कर गई है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एटलीस्ट ये बॉडी से बाहर रहेगा। अगर उन्होंने कहा कि जटामांसी का हम तावीज लेते हैं और उसको इमोशनल इफेक्ट करेगा या तकिया के नीचे रखेंगे तो करेगा, तो ये वो चीजें हैं जहां पर कि कोई भी लीगल पॉइंट नहीं बनेगा। हाथ छोड़ना, टच करना या उसको कहना या जवान से ही पता लेना देना बहुत दूर की बात है। पहले तो हम अपने संदर्भ ग्रंथों में दिए गए निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने के लिए जो शब्दावली बना सकते हैं वो बना ले। माने ज्ञान विज्ञान धैर्य और स्मृति, स्मृति तो स्मृति के और समाधि भी। तो समाधि में तो समाधिस्थ करना मीन्स जस्ट टू कूल हिम डाउन, नॉट टू लेट हिम अलाउ टू इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ सुसाइडल एक्टिविटीज। वो मीटर जो होता है बिजली की मीटर, वहां सुसाइड करने के लिए किटकिट पकड़ने चला जाता है, वहां पर करंट को टच कर सकता है जस्ट टू इंजर हिमसेल्फ। तो ये तो हमारे आयुष विभाग को होना चाहिए कि भाई हमारे पास ग्रंथ में डायरेक्शन दिया है और उसको और गहराई से TKDL की सहायता से और गहराई से हम उन सिम्टोमेटोलॉजी का एक कहना चाहिए एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं और उसमें चर्चा करें तो वो हमारे डिपार्टमेंट तरफ से लीगल हो जाएगा। हमारी किसी भी चिकित्सक की एटलीस्ट ये धारणा तो कभी हो ही नहीं सकती है कि हम अपने मरीज को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना देके उसको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। अपना भाव यह है उसके उठे हुए, उसके उग्र रूप को शांत करने के लिए हम अपनी श्रेष्ठ औषधियों का सहयोग लेंगे। ये हम सबकी मंतव्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही विषय बढ़िया बताया और जिम्मेदार लोगों को इस पर आगे आके एक गाइडलाइंस निकालनी चाहिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नमस्कार। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज नॉर्थ ईस्ट में अगर इस टाइप की कोई सेल्फ इंजरी की घटनाएं घटती हैं और वहां पर क्या बेस्ट सपोर्ट मिल सकता है, मैं डॉक्टर नीलाक्षी देव चौधरी जी को, अगर उनके पास कोई एक्सपीरियंसेस हैं, उनको इनवाइट करते हैं एंड शी वुड लाइक टू एड ऑन समथिंग द एक्सपीरियंसेस व्हिच शी had in her clinical experiences, clinical practice, and again in the college teaching and sometimes of disputes between boys and girls studies in the BMS courses, and that too at the time of the clinical approach and camps, sometimes camps, etc. So if you have got, madam, some experiences, please share the experience to our international webinar platform. Thank you, ma'am. Namaskar. Namaskar, sir. Namaskar. Sir, Namaskar. Sir, I don't have much experiences problem. regarding self-injury. Of course, I remember there was a student in our college. She was very much disheartened with the course. At first, she was okay. She was very happy with the course. She used to play and enjoy the course. And she was a player. But later on, her mother complained that she didn't feel like studying. So she was taken to a psychiatric, and the doctor gave her medication. But after that, they thought of switching her to Ayurvedic drugs. And so her mother, she was from Arunachal, she came and to make her daughter, she said, what can we do? I said, you can start Ayurvedic medicines like Ashwagandha, Tagar, etc. And I gave a prescription and I told her, you do meditation, plus we should start Sirodhara. So the daughter, she was reluctant. She didn't want, even when I asked that why do you want to leave the course? Why? All the students were surprised that at first she was so happy, but after a few months she got disheartened. She said, my classmates don't like me, my seniors say something like that. So in fact, she had been to a psychiatrist also. Then I advised the mother, okay, whatever be it, let's give her Sirodhara and the medicines and Nashya.
But she took medicines, but she was not much interested to do Sirodhara. So what her mother did to promote Sirodhara, she started doing. She said, she came to the hostel. She was a lady working in Arunachal government office. So she started doing Sirodhara. And her mother was so happy. She said that I'm feeling so nice. She used to come running that I feel so nice. My brain seems to function more properly. But later what happened, the daughter got more irritated. And finally, one day she switched off the phone and she went off. And later on, we had to inform police, and police tracked her down. And later on, she left the course. So so that was a surprising thing. At first, she was very much interested. She was a sportsman, but later, without any reason, after 1 year, she didn't want to continue. In fact, she wanted to go home, and she couldn't say properly also why she wanted to go home. Whether the subject was hard, or but doctor thought that it was a mental issue. And apart from that, I don't have such self-injury cases. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. It's very unfortunate that she left the course. Actually, the Yes. time when she was having disturbance, that was the right time when the she may be given a proper information that to make a career, to become a doctor is Yeah. very different issue, and for that Yes. you need a good health. But to regain health or to keep yourself mentally, physically healthy, you have to go through under certain process which will make you okay, healthy. It's a very unfortunate that though so many things and therapies were available, Yeah. her destiny was a little bit different. Yeah, So yeah. ultimately, And her mother was so reluctant. I said, okay, you take leave, go. After 1 year you can come, huh? yeah, no You take problem. her Yeah, home. Yeah. yeah. But later on, that was a problem. So that was a case of self-injury. I thought she was so much disheartened. Definitely. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much that you Thank you. still you are not having that much experience, but you whatever you contributed, that is excellent, and it is a vital case which Yes. ultimately say left and rather left the footsteps of the say real self-injury, which definitely made some wrong or worst scar in her mind, and she had to left the subject, the course itself. Well, Yes. meanwhile, I am getting the signals from Dr. Nitin Rumalia ji. I am hopeful that he is going to add on something which he got in between the discussion. Dr. Nitin, you are invited. नमस्कार. ये नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था, हमारे सीनियर फैकल्टी हैं डॉक्टर विमल अरोड़ा सर, रसशास्त्र विभाग में। नाम है जी 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 जी, रसशास्त्र विभाग में वो रीडर हैं हमारे अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर में। तो वो कुछ फैमिलियर होना, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, और वो इस वेबिनार में हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। तो मैं उनको फॉर्मली इनवाइट करता हूँ जी। जी जी, और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो देना चाह रहे हैं, तो लीजिए बात करिए। तो जी जी, डॉक्टर अरोड़ा जी आपका डॉक्टर अरोड़ा जी आपका स्वागत है। ये हमारा खुशी का दिन है, हमारा प्लेजर है कि आप जुड़े हुए थे। मैंने लिस्ट में आपका नाम लिखा हुआ है। आप तो बहुत अर्ली जुड़ गए थे और मैं वेट कर रहा था फोन की। या जी, मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई, इसलिए मैंने फिर ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, आई वाज एक्चुअली बिजी विद आवर गेस्ट स्पीकर्स एक्चुअली। अदरवाइज व्हेन वी स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन, वेरी नेचुरली वी सो मेनी टाइम्स गो थ्रू द लिस्ट ऑफ आवर गेस्ट फ्लोर स्पीकर्स, so during our discussion, so I noted you down at a very early stage. I'm just getting so many persons here, and नितिन सर ने मुझे दिया जी, और मैं कनेक्ट हो गया था। जी जी, मैं आपको करीब 12वें नंबर पर डॉक्टर विमल अरोड़ा, मैंने सीक्वेंसली मैंने 12 नंबर आपको एनरोल कर रखा था आज की अपनी टीम में, जबकि हमारे पास स्ट्रेंथ 18 की हो गई थी। तो एनीवे, आई मोस्ट ऑनरली इनवाइट यू, and first of all I extend my invitation from IRES platform that you please remain regular in our webinars, and please leave your details in our chat box so that we will be in position to send you the daily invitation information along with the links. मैं बस इस अवसर पे सर मैं इस अवसर पर यही आपसे कहना चाहूंगा
कि हेलो जी जी हेलो सुनिए, सुन रहे हैं। यस सर, मैं यही एक कहना चाहूंगा कि मेरा ये सौभाग्य है कि आप जैसे गुरुजनों के साथ में जुड़ूंगा और शास्त्र के बारे में मैं और कुछ नया सीख पाऊंगा और इसी के माध्यम से हम अपने संहिताओं के बारे में और उसका लोडन कर सकेंगे और उसको और गहराई से पहचान कर सकेंगे। मेरा यही इच्छा है कि मैं आगे बढ़कर आपके साथ जुड़ूं और आपके विचारों से मैं अपने ज्ञान को भी अभिवर्धन कर सकूंगा। Thank you so much, and Doctor, I also जी thank Dr. Nitin Nurmaliya ji, as he told you about you जी that you are a faculty in Russia Special Kalpana. सर मैं एचओडी हूँ शास्त्र विभाग में और रसशास्त्र। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में जी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर में मेरा 24 साल अच्छा का अच्छा। अनुभव है और मैं पवन शर्मा जी सर जो है हमारा उनके साथ मेरा सानिध्य और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है मुझे। अरे तो आप तो वो इंदौर से कितने लोग जुड़ते हैं हमारे इंदौर के, अपने जी जो जी अखिलेश भार्गव जी हैं पूरे हाँ नशा हाँ मुक्ति हाँ और जी कैंसर के जी लिए, जी जी हमें बल्कि जी जी अखिलेश जी भार्गव जी का भी नंबर जी जी चाहिए था, फोन नंबर, हमसे संपर्क करना चाहते जी हैं। जी तो प्लीज मिल उसको भी जाएगा सर आपका नंबर। डाल दीजिए चैट बॉक्स में। और जी आप जी जुड़िए, बराबर जुड़िए। आप पवन जी जी से जी आपको डायरेक्ट लिंक है, फिर तो हम बिल्कुल। कौन होते हैं बीच में, फिर तो आप रसशास्त्र वाले नहीं नहीं लोग नहीं हैं आप लोग। नहीं 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 नहीं, आप जैसे गुरुजनों के साथ मुझे नहीं, पहले आप आने लोग में आपका रसशास्त्र परमिशन चाहिए अभिनिष्ठी था हैं, और और प्रोफेसर औपचारिक पवन जी परमिशन के तो बाद ही मैं जुड़ूंगा बहुत आपके साथ। बड़ा अनुभव रखते हैं। अब जी 36 साल का उनको अनुभव हो गया रसशास्त्र और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ के। तो अच्छा लगा मुझे जी जी आपको आज आज के विषय में यदि आपको कुछ चर्चा करना है तो आपका स्वागत है। ये सर तो इंट्रोडक्टरी, मैं अब तो इंट्रोडक्टरी आज बातें हो मैंने गई। पूरा विचार में ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया था पर कोई ये भी बात। है कि हमें इस सेल्फ इंजुरी के जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें अपने सिद्धांतों में और अपने जो संहिताएं हैं, चरक संहिता है जी जी जी। और दूसरे भी जो संहिताएं जिसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट दिया हुआ है उसमें हम ऐसी खुद का प्रोटोकॉल डेवलप करना चाहिए जिसमें बिल्कुल हमें फिजिकल इंजरीज और इंटरनल जो इंजरीज हो रही उसके लिए हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए और हम ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट है जिससे हम स्वयं जानकारी ना होते हुए हम सेल्फ इंजरी को इनवाइट कर लेते हैं, चाहे वो इंटरनल इंजरी हो या वो फिजिकल एक्सटर्नल इंजरी हो। तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं हमारे उसमें हम किस प्रकार से हम जैसे कि सपोज करिए जो रीनल सिस्टम है उसमें हमारा जो आहार विहार और जल लेने का जो नियम है वो किडनी की डिसीज हो चाहे वो डायबिटीज हो चाहे वो हार्ट डिसीज हो उसमें मॉडर्न एस्पेक्ट में इनटेक ऑफ फ्लूइड एंड इनटेक ऑफ वाटर के बारे में वो बताते हैं। बट हमारे यहाँ भी ऐसा बताया गया है कि अगर हम मूत्र को रोकते हैं तो मूत्राशमनी हो जाती है। तो वी आर इनवाइटिंग द इंजुरी इनसाइड अवर बॉडी। सो जो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, शुक्राशमनी होती है, मूत्राशमनी होती है। तो ये हमारी सिंपल सी जो दैनिक जो हमारी दिनचर्या बताई गई है उसमें भी बहुत सारे ऐसे रास्ते बताए गए हैं जहाँ से हम समझ के उसको बता सकते हैं, अपना प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हैं कि हमें कौन सी इंजुरी डेवलप हो जाएगी। कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो इसमें मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि नहीं हार्ट ठीक है। डिसीज के बारे में भी बताया गया है कि हार्ट का जो व्यवहार है उसके लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है कि उससे हम अपनी एक्टिविटीज से और अपने व्यवहार से हम हार्ट डिसीज की जो कहना चाहिए बीटिंग है, जो हार्ट बीट है उसको हम लोग इनवाइट कर सकते हैं, सेल्फ इंजुरी में इनवाइट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है इसका। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि अगर हम लोग आगे इस सब्जेक्ट पे दोबारा बात करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करके हम और अच्छा सीख पाएंगे इसके बारे में। सर जी डॉक्टर सर। साहब, आपका अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रियली आपने उस पक्ष को छुआ जो शायद ये लोग चर्चा ही नहीं आज ले पा रहे थे, ये सोच के कि जी हम कुछ कुछ और ही बताएं। जी ये बिल्कुल जी सच बात है, और जो मैंने अपने शुरुआती शब्दों में कही थी वही वहीं पर आके आज हम फिर पहुंच गए कि जी जो धारणीय वेग हैं जी उनको हम जी जी अगर धारण नहीं करते हैं जी और जी जी अधारणीय वेग को धारण करते हैं तो ये जी नाना जी जी प्रकार की व्याधियां सेल्फ वेरी गुड। इंजरी की जी कैटेगरी में सर आ जी जाएंगी। आपने जी वही सर बात जी रखी। सर जी वेग जी का जी जी हम धारण न जी करेंगे, धारणीय वेगों को जी जी धारण नहीं करेंगे, और अधारणीय जी वेगों जी को जी धारण करेंगे, जिसमें कि जी मूत्राशमरी, शुक्राशमरी, जी आंसू जी के जी धारण करने से नेत्र जी ज्योति जी का जी ह्रास होना। तो ये निश्चित सी बात थी, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक था।
जो हमारा जी 7वां सर, जी सर, अध्याय कहा ही इसीलिए गया है जी, कि धारणी अधारणी योगों की चर्चा की थी और जी सर, उसके निवारण के लिए उनकी उनकी चिकित्सा, उनके लक्षण, उनका समाधान, उपचार और अन्यथा फिर उनके उपद्रव सारे जी, डिटेल जी, से जी, सभी चैप्टर में बताया चरक संहिता बिल्कुल, में। बिल्कुल, जी और सर, इन सब के निवारणार्थ जो सबसे स्मूथ व्यवस्था बताई थी वो थी अपनी सद्वृत्त पालन। सद्वृत्त बिल्कुल, के अंतर्गत ही जी, हमें जी, जी सर, अन्योन्याश्रित, उसमें साफ आ गया, जी, हमें जी सर, अन्योन्याश्रित नहीं होना है कि जी, यदि जी, एक जी, व्यक्ति पेशाब नहीं जा रहा तो हमें नहीं जाना है। जी, 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 अगर हम इसको जोड़ना शुरू करें ना तो चरक जी के सर, ऊपर कोई अपना जीवन के स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का कोई ग्रंथ है ही नहीं, कोई जी, जी, जानकारी है जी, ही नहीं। तो जी सत्य सर, जी बात सर, है, जी सर, सद्वृत्त जी सर, पालन के अंतर्गत जी सर, हमारा कंप्लीट वेग विधारण का जी सर, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। 7th जी, चैप्टर को नलीफाई कर दिया है जी 30वें सर, जी अध्याय। सर, तो हम ये जी, मान के चलते हैं आप जैसे विद्वान जुड़ेंगे तो ऐसे ही नए-नए विषय सामने आएंगे। मैं आपका बहुत-बहुत जी सर, धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर नितिन जी का धन्यवाद करता हूँ और इसी क्रम में मैं आदरणीय जी सर, अपने रिटायर्ड अपने फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर जी डॉक्टर सीपी शर्मा जी, जो कि ज्ञान के भंडार हैं, अनुभव के भंडार हैं और जी, बहुत ही जी, प्रैक्टिकल जी, बातें बताते, नॉलेज रखते हैं। कंसाइज फॉर्म में हम चाहेंगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में अपील की थी कि हमारी वेबिनार 8 बजे तक पूरी हो जाती है तो सभी की खुशी-खुशी यह व्यतीत होगा। 2 घंटे की वेबिनार लंबी हो जाती है। 8 हमारे वक्ता हैं, काफ़ी लोग अपने ज्ञान ज्ञान की बातें बता चुके हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर सीपी शर्मा जी को बहुत आदर के साथ में इनवाइट करता हूँ। नमस्कार सर। आइए और अपनी कुछ बातें हमको आज के प्लेटफॉर्म में शेयर कराइए। नमस्कार सर। डॉक्टर सीपी शर्मा सर। सर नमस्कार। आपको हमारी आवाज़ सुनाई पड़ रही है सर? इस बीच जब तक डॉक्टर सीपी शर्मा जी कंफर्टेबल होते हैं, हमारे साथ डॉक्टर लीना केरकर जी हैं और साथ में यस उनके विचार हम ले सकते हैं। डॉक्टर लीना जी आपके पास कोई इस संबंध में आज की टॉपिक से जुड़ी हुई कोई अनुभव, कोई अपने छात्रों का अनुभव, परिवार का, सोसाइटी का यदि कोई अनुभव है, तो आप हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करना चाहेंगे? आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे प्लेटफ़ॉर्म के अगर आज के विचार सभी के आ गए हैं, तो मैं एक बार चाहूँगा कि डॉक्टर हमारे प्रोफेसर पवन शर्मा जी भी एक बार अपील कर लें, जिससे कि यदि कोई विचार शेयर होते हैं तो अच्छा है, स्वागत है उनका और नहीं तो आगे की कार्रवाई के लिए वो अपना आगे का संचालन के काम अ, लेने की कृपा करें। डॉक्टर सीपी शर्मा जी आपका पुनः एक बार स्वागत है। आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी बात बताइए थोड़ा-सा आपके इनपुट्स का हमें इंतज़ार है। सर नमस्कार जी। लगता है वो अ, शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं मीन्स तो आवाज़ नहीं सुन रहे हैं या शायद कंफर्टेबल नितिन जी नहीं कुछ है। बोलना चाहते हैं शायद। नितिन जी के हमने बुला लिया था, उनको उन्होंने चर्चा कराई ना अरोड़ा जी की। नहीं, अपर हैंड हो रहे हैं ना। हाँ, हाँ, वो उन्होंने डाउन नहीं किया। डॉक्टर नितिन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो डॉक्टर नितिन रुमालिया जी आपका हैंड रेज़ हुआ है। पहले आदरणीय कभी डॉक्टर सीपी शर्मा जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आदरणीय सीपी शर्मा जी। थैंक यू रंजन जी। Thank you very much. Please do join our platform as it is long for 2 hours, but it is knowledge sharing, no doubt. जी सर। Thank you very much, sir. Good मैं night आज to के all. सभी अतिथि वक्ताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे दोनों वक्ता डॉक्टर रंजन जी और हमारी डॉक्टर मैडम पारुल मैडम जी ने बहुत ही ज्ञानवर्धन का किया। आज का उनका धन्यवाद। और हमारे डिस्कशन में डॉक्टर निशांत जी जुड़े, डॉक्टर नितिन जी जुड़े हैं। उन्होंने सबने अपने डिस्कशन दिए। लास्ट टू लास्ट हमारे पंकज अरोड़ा जी जुड़े हैं और उनका तो हमें इन्विटेशन इस बात का अच्छा लगा कि उन्होंने स्वयं से माना कि हम जुड़ना चाहते हैं, आगे जुड़ेंगे। उन्होंने नंबर भी शेयर कर दिया है। हमें उम्मीद है प्रोफेसर पवन शर्मा जी उनको अपना दिल्ली का लिंक भी भेज दिया करेंगे और शास्त्र हैं उनका संविभागी ही हैं, तो उनके ज्ञान से हमें रोज का रोज लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों